Hey all, Ankit Kishore this side from Stierfleet team and welcome back to my channel. So sorry, I'm making this monthly written video after so long. And last month also I didn't make any video और इस month भी मैं बहुत late video बना रहा हूँ. So today is 6th of November and even October series का जो मैं update दे रहा हूँ वो आज बना रहा हूँ videos का, ठीक है. So without further delay मैं directly video में जाता हूँ और आपको पूरा explain करता हूँ. And reason for not making video and reason for taking so much time because I was completely occupied with some other work और इसलिए मेरे को टाइम मिला नहीं कभी वीडियो बनाने का. और लास्ट मंथ ऑल्सो आई एक्चुअली वॉज बिजी विथ सम वर्क, इसलिए मैंने मंथली सर्टन वीडियो नहीं दिया. और मैं बीच में सोच भी रहा था बट उसमें काफ़ी लेट हो चुका था. देन आई थॉट कि चलो नेक्स्ट मंथ मैं दोनों मंथ का एक साथ वीडियो अपडेट दे दूंगा. एंड एट द सेम टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ आई एम गोइंग टू अप्रोच टुडे. तो पहले मैं आपको बैक कंसोल में जाकर के दिखाऊंगा क्या प्रॉफिट एंड लॉस बनाया तीनों अकाउंट में, दो मेन अकाउंट एक स्मॉल अकाउंट पे. देन आई विल शो दिस एक्सेस शीट टू यू. ओके, सो लेट्स डायरेक्टली गेट इनटू इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू दिस जीरोधा अकाउंट. पहले मैं सितंबर सीरीज दिखा देता हूँ. ओके, बहुत रैप करूँगा बहुत क्विकली सितंबर सीरीज को. सी सितंबर के कुछ मैंने 96 के प्रॉफिट की ऑलमोस्ट 2% प्रॉफिट एंड ऑन नेट टर्म इट इज़ लाइक 1.5%, 1.6% you can take, and the same goes with this account. Okay, इसका भी मैं दिखाई देता हूँ. It is taking some time. मैं एक काम करता हूँ, मैं दोनों मंथ एक साथ दिखा रहा हूँ. ओके, तो वो ज़्यादा इजी होगा मेरे को समझाने में. बाकी मैंने एक्सेल सीट में पूरा अपडेट इंडिविजुअली दे रखा है, हर एक दिन का जर्नल मैंने बना रखा है. ओके, सो वो वहाँ से मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा क्या चार्जेस दिया मैंने एंड एवरीथिंग. सो इन दिस अकाउंट नेट प्रॉफिट इज 99K, मीन्स ऑलमोस्ट 2%. एंड द चार्जेस इफ विल सी इट्स वे टू हाई. ओके, एंड दैट्स जस्ट पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस. हमारा काम ही है अपडेट करना पोजिशंस को, एडजस्ट करना पोजिशंस को. एंड एज वी आर नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर तो हमें हर बार एडजस्ट करते रहना होता है. तो दैट्स वाई द चार्जेस ऑन द हाइएस्ट है. एंड दिस IBT 15 is the brokerage that I have paid. So in the last 2 months only, the brokerage that I paid is almost 32K, and including all the charges, it is like 50K plus. Okay, 7K plus 3.5, 7K, the 14K altogether here only, and 32K here. So 46K, and then 45 and 5,000 almost is here. So almost 51K is the charges that I paid. So including charges on gross term, in the last 2 months I made 3% return, but on net term I made 2% return in this account. एंड इसमें से सितंबर सीरीज़ में ही सारे प्रॉफिट्स हैं. अक्टूबर सीरीज़ का मैं फिर से दिखा देता हूँ, एक सेकेंड. ओके, आई नो इट इज टेकिंग सम टाइम, सो आई विल ट्राई कि मैं यहाँ पे 2x पे कर दूँ इसे, सो दैट इट शुड नॉट टेक सो मच ऑफ योर टाइम. ओके, तो मैंने ओवरऑल आपको बता दिया है. एंड यू हैव टू डू सम मैथ्स ऑल्सो बिकॉज हियर आई एम गिविंग अपडेट अबाउट 2 months ना, तो थोड़ा बहुत complexities होंगी. So try to understand that. Okay, so I'm just giving an overview. So here 22K profit is what I closed with, almost 0.5% positive in this account. But in this account, talking about October series, I booked a loss of 32K, and that is the reason. If you'll include both these two, then almost 10K is the loss which I booked, and this is what is visible here. See, this is the October series. Okay, and this is showing 61K profit because this is showing GP. You know, this is gross profit, and net profit I always put it right here. So here is the gross profit, and this includes all three accounts, 2 main accounts and 1 small account. तो ये मैं बाद में explain करता हूँ, पहले मैं तीनों अकाउंट को explain कर देता हूँ. See, so this is the month. So by the way, पहले मैं थर्ड अकाउंट दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर directly I will get into this thing. See, this is the third account. और इसका मैंने अपडेट दे रखा है, तो मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर का दिखाऊंगा. एंड अक्टूबर वॉज अ वेरी 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 बैड मंथ फॉर दिस अकाउंट, एंड इट एक्चुअली वेंट थ्रू अ बिग डीडी. और मैं सब एक्सप्लेन करता हूँ. इट इज शोइंग 53K आई थिंक. ओके, बिकॉज इट इंक्लूड्स प्रॉफिट ऑफ दिस मंथ ऑल्सो. Yeah, this is the overall net loss that I booked. This is 1 lakh
1,000 rupees, but if you'll see the charges that I paid, I've done the maths, it is 50,372 rupees. You can add yourself also, I'm showing it here, you can take a screenshot and can do the maths. So यहाँ पे जो charges मैंने से पे किया वो 50,372 on a capital. I actually increased the capital also, तो earlier it was like 30 lakh, बट अब ये 36 लाख का अकाउंट था जब मैंने अक्टूबर सीरीज के पहले ही दूसरे दिन में मैंने डाल दिया था, इन्फ्यूज़ कर दिया था बाकी कैपिटल को. तो इट वाज अ मंथ, इट वाज हैविंग अ कैपिटल 36 लाख. ऑन दैट बेसिस इफ यू विल सी, सो द टोटल दैट आई हैव, see the total gross loss that I made in this small account is 1.4%. This is the loss, and on absolute term it is 50,627 rupees. But if talking about net profit or net loss, you can say it is 1 lakh rupees, which is 2.8%. Now talking about the DD here, see now I will just stay here and will explain everything here only, because this will make more sense to you rather than going and switching all three account continuously. Okay, so यहाँ पे मैं सब कुछ explain करता हूँ. So the maximum DD that I went to in October series, because October series was a hell of a ride for me, and it was definitely in my complete trading career, it was definitely one among the top 4 worst performing month. Okay, but still overall DD that I touched till now was 1.75% in main account. But talking about a small account, I reached a DD of 4.5%. एंड वाई दैट हैपन, क्योंकि मैंने एक वीडियो भी बनाया था एक्सपायरी की ट्रेडिंग की वीडियोस में बना रहा हूँ अभी मैक्सिमम, और मैक्सिमम मैं एक्सपायरी ट्रेडिंग करता हूँ. तो उनमें से एक एक्सपायरी में मैं भूल गया था बिल्कुल ही उसे मैनेज करना, एंड देयर ओनली आई टुक अ हिट ऑफ ऑलमोस्ट 1.82%, 1.8 और 2%. ओके, एंड इट रीज पॉइंट ऑफ टाइम, इट रीज इवन 3.some%. Okay, that's the loss that I took in one day only. And other than that also there was a very big loss day. Okay, that was also on expiry day, and this was I think on this Monday. Yeah, no, सॉरी दिस थर्सडे. मंडे में ये इतना बड़ा कुछ लॉस हुआ नहीं था स्मॉल अकाउंट में, बट दिस थर्सडे आई बुक्ड ऑलमोस्ट 64 के लॉस, विच इज अगेन लाइक 1.8%. okay, so here and 1.8% loss day in a small account, and because of that I took a DD altogether of 4.5%. although till now including today's profit, wait मैं वो भी दिखाता हूँ. So including today's profit, I think now the DD has come down a lot, because you have just seen 53k is the ongoing loss, and including this profit, I will be somewhere around 37-38k loss, which is like 1% loss. Okay, and I was up 1%, so altogether 2% loss is still there in a small account. And talking about main account, here it is. So drawdown is more or less clear. Okay, 0.4% is showing. And after today's 0.2 is nothing. I was just testing something. So मेरे को ऐसा कुछ आज रिस्क रिवॉर्ड देखा नहीं, इसलिए मैंने कुछ ट्रेड किया नहीं मिड कैप निफ्टी पे. अगर कुछ दिखता डेफिनेटली आई वुड हैव ट्रेडेड इवन इन मेन अकाउंट, बट मैंने वो ऐसा कुछ किया नहीं, तो आज को एक्सक्लूड ही करता हूँ. तो उसे हटाकर 0.4% अभी नेगेटिव हो. बट दिस कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर द मैक्सिमम ड्रॉडाउन दैट आई टच्ड was 1.9%. This month the maximum I touched is 1.75. So altogether still I have not crossed 2% DD. And why this happened? Because of the approach that I'm having. See, when my losing streak is going on, first of all what I do is I cut my loss. Okay, I cut my loss. By saying this I mean to say my max loss limit for the day, my risk RMS limit, I cut it a lot. And that is the reason when I started this month, I started with 1.5% max loss for a day. But as and when I took this hit, this big hit, this was the biggest hit. Okay, after that I decided, I even told you in the channel also, telegram channel पे मैंने ये अपडेट दिया था कि अब यहाँ पे मेरा जो मैक्स रिस्क एपिटाइट होगा फॉर अ डे विल बी 1% max to max. And that is the reason not even a single day I touched 1% loss, क्योंकि जब भी मैं उसके पास भी जा रहा था I was cutting my position and I was keeping a buffer, जिससे मैं लास्ट के आधे एक घंटे में कैपिटलाइज कर रहा था. Okay, that's how I was going for it, and it will continue till the point this DD won't get clear. 1% risk appetite will be there, and as and when the DD will be clear, and more or less it is cleared only. So जैसे ये clear होता है उसके बाद फिर मैं again 1.5% का max risk appetite रहेगा, वो एक्सट्रीम डेज के लिए होगा. अगर फ्रिक्वेंटली अगर ऐसा कुछ हो रहा है, बिकॉज यू नो लास्ट मंथ वी हैड सो मेनी हॉरिबल एक्सपायरीज वेयर 1 रुपीज ऑप्शन वेयर गोइंग टू 100 रुपीज एंड सो मेनी एक्सपायरी इट हैपेंड. बहुत सारे मैक्सिमम हर एक्सपायरीज में हो रहा था कंटिन्यूसली. सो इट वॉज वेरी हार्ड फॉर अ नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर हु इज ट्रेडिंग फॉर whole day to manage, and that's the reason lots of tweak has to be done. Okay, and I did some tweaks because this is the need of a time. अभी अगर मैं पुराने ट्रेडिशनल वे में ट्रेड करूंगा तो मैं प्रॉफिट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मेरे को ट्वीक करना पड़ेगा. जब से मैंने ट्वीक किया तो मोर और लेस थोड़ा डीके मिल रहा है, एंड इवन मार्केट इज ऑल्सो फेवरिंग अ बिट, सो आई वोंट टेक दैट कंप्लीट क्रेडिट. सो बट अगर जब भी वैसा कुछ मूव होगा आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उस पर थोड़ा फंसूँ नहीं.
ओके क्योंकि लास्ट मंथ अगर आप देखोगे मैंने बड़े लॉस कब कब लिए, ठीक है, दिस इज 1.1% लॉस, ठीक है, दिस इज 0.4% लॉस, दिस इज 0.58% लॉस, दिस इज 0.6% लॉस एंड दिस इज ऑल्सो वेट this is 0.22% loss. So these are not big losses, okay, these three are not big losses, but these two, but anything above 0.5% loss is a big loss for me. So these three, and in a month if I'm taking three big losses, 3.5% plus losses, then this is a matter of concern for me. I know for many, for majority I would say 0.5% loss is nothing, okay, but for me and the kind of risk management that I do और जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, तो mainly even 0.5% matters, okay, and that's the thing, that's how I see it, okay, because for me this is a long term business और यहाँ पे मैं कुछ भी रिस्क नहीं रखूंगा टेबल पे, जो भी मेरे को रिवॉर्ड दिख रहा है मैं उसके सिंक में ही रिस्क को रखूंगा, सो दैट ओवरऑल आई शुड हैव सम एज और मैं उससे प्रॉफिट करता रहूँ, okay, not if not in the monthly basis, at least in the quarter basis, okay, so that's the thing. This is about the gross profit, DD, okay, and how days went in this month, and this is the journal. You can take a screenshot of this also and you can see what I have written here and everything you can do. So this is for me personally, this is a journal. Even this videos that I'm making, these monthly videos that I'm making, these expiry videos that I'm making are a journal for me, okay, and that's how I say it. और इसलिए मैं कोशिश करता हूँ जो भी मैंने गलतियां भी करी है I should show it in front of you and I think it might be helping you, okay, अगर आप इसे देख रहे हो तो आपको भी समझ में आ रहा होगा मैंने कहाँ गलतियां करी, एक्सपायरी वीडियोस में मैंने बताया भी है काफ़ी, मैक्सिमम एक्सपायरी वीडियोस में मैंने बताया मैंने कहाँ गलतियां करी, किसे मैंने रन करने दे दिया जिसके कारण मेरे को लॉस हुआ, कहाँ पे मैंने प्रॉफिट नहीं सही से बुक करा. सो देयर आर मेनी थिंग्स, सी वी ऑल आर ट्रेडर्स, ऑब्वियसली वी विल कीप ऑन मेकिंग मिस्टेक्स, ओके, दैट्स जस्ट पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, ओके, एंड और फॉर द फैक्ट एनी बिजनेस, सो दैट्स हाउ थिंग्स वेंट. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट नेट टर्म, see on gross term the overall loss that I booked in the October series is 0.44%, sorry, 44,000 rupees, but the charge that I paid, if you see including all these, the maximum charges that I paid is in the October series. Why? Because I was managing like hell, okay, मैं बहुत मैनेज कर रहा था पोजिशंस को और इसके कारण चार्जेस ऑब्वियसली यू हैव टू पे एंड दैट वुड बी इन द हायर साइड, बट this is a matter of concern again for me because to me anything above 1 lakh rupees as charges it is a red signal, ओके, सो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि इस मंथ मैं 1 लाख से नीचे चार्जेस पे करूँ और बिकॉज अकाउंट साइज इज बिग, ओके, फॉर टोटल 1.4 लाख है अब नाउ, सॉरी 1.4 CR है, इवन दिस अ स्मॉल अकाउंट आई मेड इट व्हाट 40 लाख, ठीक है, so altogether 1.4 lakh is the margin, 1.4 CR is the margin, so obviously charges I have to pay for the business that I'm doing, so this is it. And talking about net profit, obviously net loss, so including these two it is 1.65 lakh loss and max DD that I touched about 1.7%. and here जो max DD मैं कंसिडर करता हूँ वो सिर्फ मेन अकाउंट्स की करता हूँ क्योंकि मेन अकाउंट से मैं जो मेरी रिफाइंड स्ट्रैटेजीज होती हैं और रिफाइंड ट्रेडिंग होती है मैं बस वही डालता हूँ. एंड इन अ स्मॉल अकाउंट आई डू मेनी ऑब्जर्वेटिव ट्रेड्स ऑल्सो, बहुत R&D भी करता हूँ मैं, कुछ भी ट्रेड्स देखता हूँ लेकर टेस्टिंग ट्रेड्स डालता रहता हूँ, तो उसकी DD को मैं इतना कंसिडर नहीं करता, बट दे ऑल्सो हैव अ कैप कि 5% 6% DD जाएगा, दैट्स अ बिग रेड सिग्नल फॉर मी एंड देयर आई हैव टू गेट प्रिकॉशियस, ओके, लाइक फॉर मेन अकाउंट इफ माई लॉस इज इंक्रीजिंग और एक्सीडिंग 2.5%, ओके, देन इट्स अ बिग मैटर कंसर्न फॉर मी और वहाँ से मैं बहुत ट्विक्स एंड ऑल करने लगूंगा. सो दैट्स हाउ आई अप्रोच माई मेन अकाउंट. नाउ टॉकिंग अबाउट स्मॉल अकाउंट, तो वहाँ पे मैं 5% लॉस तक आई एम ओके, 5.5 6% तक आई एम ओके, बट उसके बाद आई एम नॉट एट ऑल ओके. मैं वहाँ पे रिस्क बहुत कट करूँगा, आई विल गो स्लो, आई विल फर्स्ट ट्राई टू रिकवर द मनी, recover the losses that I paid or at least make it half, then I will go again with the same approach, with the same aggressive approach. That's how I go for my main account and that's how I go for my small account. So max DD I touched 1.75%. Altogether net ROI this month is 1.22% negative. That's why altogether it is 14.5%. This is just still here, but in November I have done some decent job or more or less losses I just told you कि काफ़ी हद तक वो recover हो गया है. So yeah, this is about it. So I think I have recovered everything. I think I have told you everything about my risk management, about all the approaches that I have, and even the tweaks, those I will cover in the expiry trading videos. So yeah, just be with me in all these expiry trading series, and I will tell you a lot many things of how to approach your trading and so many things to say. So yeah, this is all from my end, and I hope everything that I told you learned something from them, and if you do, then please do like and subscribe to my channel. Thanks a lot and bye bye.